Good morning, friends. This is Bhupendra Singh Rai from CMA Institute, and I hope you are enjoying your mathematics, your physics, and social studies lecture. Today, I am going to deliver the remaining part of numericals of the forces and laws of motion. These questions are question number 13, 14, 15, 16, and 18. I have left 17 because it is theoretical questions. So, without wasting our time, let's begin. The first question is, a hockey ball of mass 200 gram is struck with velocity 10 meter per second with a hockey stick. Then it returns back with the speed 5 meter per second. You have to calculate the change in momentum. Let's be clear. Let's suppose this is your hockey stick and this is your ball. When ball strike with this stick, at this time its initial velocity is 10 meter per second and the mass of this ball is 200 gram. While dividing by 1000, because we have to solve all the questions in MKS system, meter, kilogram and second. The 200 is divided by 1000 for converting in kilogram. So what I find, 0.2 kilogram. And after striking this hockey stick, it returns back in the opposite direction. Like at this time, its velocity is 5 meter per second. And keep in mind, because it is in the opposite direction, it will be negative. Now we have to find change in momentum. So change in momentum can be written as del P is equal to your final momentum minus your initial momentum. Or we can write your P2 minus P1. Here we can write mv minus mu, or del P is equal to, taking m as a common, v minus u. Now putting these values to find the change in momentum, friends, del P will be 0.2, or you can write in the same manner 2 by 10 for your cutting. Final velocity minus 5 and minus ये होगा आपका 10. 0.2 here minus का 5 minus 10, 0.2 becomes minus 15, or it will be your 3 kilogram meter per second, and it will be also negative. So we can say the change in momentum in the ball will be 3 kilogram meter per second. Now come to the next question, number 14. Question number 14, I didn't write the complete question on the board, but with the help of this diagram, let me clear the things. There is a bullet which is fired from this gun with the velocity 150 meter per second, and the mass of bullet is 10 gram. 10 gram. We will have to convert this 10 gram into kilogram also. What's happened actually? Suddenly it strikes with a wooden block. And then comes into rest in 0.03 second. While it strikes with this wooden block, it little bit penetrate inside the wooden block. Inside the wooden block. So friends, we have to ask two questions. The displacement of penetration means यहाँ से लेकर इसने जो penetrate किया है, अंदर जाकर के जो insert किया है, तो हमें एक तो ये distance निकालना है और दूसरा निकालना है force applied by wooden block on the bullet. जब वो bullet उस wooden block पर जाकर टकराएगी तो opposite direction में उस पर एक force exert होगा. तो force exerted by wooden block on the bullet. So let's begin. सबसे पहले हम देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है. तो फोर्स अप्लाइड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट वी पीपल डोंट हैव एक्सेलरेशन. टू फाइंड आउट दिस acceleration, let's we check what we have. We have initial velocity
we have mass of bullet, and we have time also. But keep in mind, while a bullet penetrates the wooden block, it come into rest, and I have already cleared you that when a body comes into rest, the final velocity become 0. So to find out this acceleration, now we have a sufficient data. We can say we have a first equation of motion, v is equal to u plus at, or a is equal to v minus u upon t. So very first, to find the force applied by a wooden block on this bullet, we will have to find this acceleration. So acceleration is equal to final velocity, initial velocity upon time. So this will be final velocity is 0, initial velocity is given 150, and time is also given 0.3 second, 0.03 second. While solving it, minus 150, 0.03 here, what I find minus 5000 meter per second square. So it will be negative because when the bullet comes into rest, it has retardation. That's why a is equal to minus 5000 meter per second square. So we can calculate our force, mass into acceleration. Force is equal to mass. I have told you 10 gram. It will be divided by 1000 into acceleration minus ka 5000. By cutting this, what I find, F is equal to minus ka 50 Newton. So this will be the force exerted by wooden block on the bullet. The one thing is left, displacement, distance of penetration. तो इसे फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अनदर फॉर्मूला, सेकंड लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ द, या हम इससे भी ज्यादा इजी होगा थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as. फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 150 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू है माइनस का 5000, और s जो है ये हमें फाइंड आउट करना है. ये प्लस माइनस नेगेटिव होगा, या एक स्टेप और ले लेता हूं मैं, ये होगा आपका 150 का स्क्वायर और ये होगा माइनस का आपका 10,000 s, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, या ये होगा आपका 10,000 s इज इक्वल टू 150 का स्क्वायर, और कैन राइट s इज इक्वल टू 150 into 150 upon 10,000. Cutting these values, what I find, s is equal to, ऊपर होगा 2 to 5 और नीचे होगा आपका 100. It becomes 2.25 meter. So friends, the distance of penetration of bullet in the wooden block will be 2.25 meter. तो friends, हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15, इसकी भी लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी, बट आई होप कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम which is moving with the velocity 10 meter per second and it's stacked with a wooden block, है ना, and there is a collision between this ball, this object and this wooden block, and the given mass of wooden block is 5 kilogram. What's happened after collision? Both the object and that wooden block move with the same velocity in this direction. You have to find out the velocity of this combination, means combination of this object and wooden block, and the two more things you have to find out, momentum before collision and momentum after collision. So मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, आपको इससे चीज समझ में आएगी. We know law of conservation of momentum, ये सजेस्ट करता है आपका मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. ये होगा फ्रेंड्स आपका m1u1, ये होगा m2u2, होगा
m1v1 और होगा आपका m2v2। हियर m1 ये है आपका 1 और वेलोसिटी है आपकी यहाँ पर u1 आपकी 10। m2 दे रखा है उसने मास ऑफ वुडन ब्लॉक, ये होगा 5 और इसकी जो है वेलोसिटी वो है आपकी 0। वेलोसिटी होगी आपकी 0 क्योंकि वुडन ब्लॉक जो है वो रेस्ट में। नेक्स्ट m1v और m2v मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आफ्टर कोलिजन ये जो कॉम्बिनेशन है ये मास m1 है और m2 है, लेकिन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है आपकी v। m आपका वही रहेगा 1 इंटू v हमें फाइंड आउट करना है और या एक स्टेप में बढ़ा लूँ तो ये होगा आपका m1 m2 और हो जाएगा आपका v। ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 + 5 और v ये होगा 10, ये होगा 6v या v is equal to 10/6। After cancellation you will find it near about 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे इस कॉम्बिनेशन की जो वेलोसिटी जिससे कि ये वुडन ब्लॉक और ये ऑब्जेक्ट दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगे। आगे हम देखते हैं उसने हमसे कहा है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हम यहाँ निकालते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। जब आप ये निकालेंगे तो होगा m1u1। यहाँ मास दे रखा है 1 और उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपकी 10, तो ये होगा आपका 10, ये होगा आपका 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वी नो व्हाट वी नो कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम जब आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपका 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और यही आपका क्या होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये भी आपका कितना होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A body of mass 100 kilogram is accelerated uniformly with the velocities from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. It has been accelerated in 6 seconds by 5 meter per second to 8 meter per second. So obviously the body will be accelerated. We have to find out the initial and final momentum and the force on that object. So we will start from the second part. We know the laws of second law of motion state that कि change in rate of momentum is directly proportional to applied force। ठीक है, तो उसी से हमने यहाँ पर लिखेंगे F is equal to change in momentum can be written as your final momentum minus initial momentum upon क्या होगा आपका टाइम। हम और इसे लिख सकते थे F is equal to ये होगा आपका mv माइनस ये हो जाएगा आपका mu अपॉन हो जाएगा आपका नीचे 10। हम यहाँ निकालते हैं कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इट इज वेरी इजी टू डू। F इज इक्वल टू मास दे रखा है उसका 100 और यहाँ जो है आपकी इसे और लिख सकते थे mv माइनस u अपॉन हो जाएगा आपका 10। तो फाइनल वेलोसिटी है 8, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 5 और जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपका 6। It will be 100 into 3 upon 6. After cutting, what we observe F is equal to 50 Newton. So, if body is accelerated by this velocity to this velocity in this second, then the force on this object will be 50 Newton. Next, we have to ask the initial and final momentum. It's very easy. This is your final momentum and this is your initial momentum. So we can say कि final momentum जो होगा ये होगा आपका P2 होगा m into v। मास दे रखा है आपको इतना और वेलोसिटी दे रखी है आपकी जो है वो है आपकी 8। तो ये होगा आपका 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और आपसे पूछा है उसने इनिशियल मोमेंटम दिस P1 ये होगा m into u ये होगा 100 into 5 it becomes your 500 kilogram meter
per second. Okay, the last question. The mass of dumbbell. ये कंसिडर करिए कि ये आपके डम्बेल हैं जिसका जो मास है ये दे रखा है आपका 10 किलोग्राम और इट falls on the floor with the height of 80 सेंटीमीटर. ये जो है हाइट 80 सेंटीमीटर से डाउनवर्ड इस पर आकर के गिरता है. If downward acceleration is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है ये दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then find momentum. We know कि momentum P is equal to होता है mass into velocity. So friend, we don't have this velocity. So finding this velocity, v square is equal to u square plus का 2as. So to find out this velocity, we have equation v square is equal to u square plus 2as. At very first, the dumbbell in rest position, so its initial velocity will be 0. Okay, here acceleration is, we have given 10 meter per second square. S means this height we have given 80 centimeter. 80 centimeter. So centimeter will be converted into meter by dividing 100. Then we will find 0.8 meter. By putting these values, v square is equal to 0 square plus 2 into a. This is your 10 and here 0.8. So v square is equal to, it becomes 2 into 10 into 0.8. Here v square is equal to, it become your, after removing decimal, here you will find 16. So v will be under root 16 or v will be 4 meter per second. So this will be your final velocity. We have to find out the momentum. Then momentum will be mass into velocity. Mass we have given 10 kilogram and velocity is 4, so it will be 40 kilogram meter per second. So I hope that now you have gone through all the numerical sections of the forces and laws of motion from your CBSE and NCERT book. I hope that you will improve more and more by watching this videos. So it's my humble appeal to you all people and my dear students to subscribe these channels and try to share so that other people may also be benefiting. Thank you very much.